So yesterday we talked about isomers, and there was one kind of isomerism that we had to still do, and that was the cis-trans isomerism. Okay, now the cis-trans isomerism is basically another name for geometric isomerism. Geometric isomerism is, yeah, so geometric isomerism, just like optical isomerism, you have a standard form in which you should bring it. So any compound you get, first of all, must have double bond. So carbon-carbon double bond is required. Okay, that's one. Second, this carbon-carbon double bond thing should be attached. Each carbon should be attached to one group. So if this is attached to A, this should also have A. So must have carbon-carbon double bond. That is required. Each carbon should have a common group. So for example, if this is attached to A, this should also be attached to A. But at the same time, each carbon should be attached to two different groups. So it is not possible that this carbon is attached to A as well. It should be attached to something else. Let's say E, D. And this can be attached to anything. Like it can be attached to D, but it can also be attached to, let's say, E, some other thing. So basically, cis-trans isomerism exists if you have a double bond when each carbon is attached to two different groups, but they share one common group. And how do you identify this? You bring it to a standard form, and this is the standard form. So let me take an example. Let's say I have this compound. To analyze if this has a cis-trans isomerism or geometric isomerism, the first thing I'll do is I'll bring it to the standard form. So I'll focus on the double bond and I'll draw that. This is my standard form. Now, this one is attached to hydrogen and hydrogen. And because of that, it cannot have cis-trans isomers, right? But let's say this was chlorine. Now, this one is attached to chlorine here. And on the other side, I have hydrogen, hydrogen, and this whole thing, I'll sum it up and I'll say that is CH3. So notice कि मैंने उसको standard form में लिखा है और फिर मैंने हर चीज को combine करके condense करके उस standard form के ऊपर focus किया. Now, do you have the requirements? क्या इसमें double bond है? क्या इसमें दोनों carbons आपस में एक common चीज share करते हैं? बिल्कुल करते हैं. क्या हर carbon different चीजों से attached है? बिल्कुल है. Okay. So this can have cis-trans isomerism. Let's see. Now, what is cis and trans? Cis means same. Trans means opposite or different. And cis here in this context means that both of these groups, the common ones, are on the same side of the double bond. Right now, this hydrogen is on one side of the double bond, and that hydrogen is on the opposite side of double bond. When they're on the opposite sides, we call this a trans isomer. Now, how do you make a cis isomer? You draw it again, but you simply switch the things on one carbon. किसी एक carbon की चीजों को आपने switch कर देना. And now you can see that both hydrogens are on the same side of double bond. And that makes it cis. Okay. Let's try it for this thing. I'll bring it to the standard form. In this standard form, this is OH, so it goes here. Cl, Cl, CH3. I don't care what that other thing is. Like अगर ये यहाँ पर दो कार्बन भी होते हैं ना, मैं सबको combine कर देता हूँ. So मैं यहाँ पे लिखता C2H5. Yes. Sir, instead of writing H3C, हम लोग CH3 like लिख सकते हैं when we're like connecting it. मतलब अगर आप कह रही हो कि यहाँ पे मैं C2H5 लिखूं? Yeah. ये जिस तरह मैंने लिखा है ये ठीक है, because carbon is attached to carbon. लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है. Thank you. ठीक है? So you just have to make sure that carbon should be attached to whatever it's actually attached to. Okay, can it have cis-trans isomerism? Of course. There is chlorine, which is on the same side. And now I will switch it on one of these. So एक side को मैं ऐसे रहने दूंगा और दूसरी side को switch कर दूंगा. And that is how I get trans isomer. So this is trans and this is cis. Now my question is,
ऐसा क्यों होता है? Why do cis and trans isomers exist? ऐसा क्या है कि ये क्लोरीन दूसरी साइड पे नहीं आ सकता? So the reason for that is basically in the geometry of these orbitals. One of these is sigma, the other is pi. Sigma exists in all three dimensions, but pi exists either on top or bottom of this, like a burger, or it exists on the sides of this, front and behind of this. Now the top thing, if it wants to come here, it has only two options. या तो ये सिग्मा खत्म हो जाए और वे बीच में से गुजर के आ जाए, जो कि होने नहीं लगा. The other option is कि वो साइड से आ जाए, बट साइड से आ नहीं सकता क्योंकि वहां पे दूसरे पाई की पोजीशन है. सो वी से दैट पाई ऑर्बिटल या पाई क्लाउड has या pi bond has limited rotation, या limited की बजाय हम restricted का word भी यूज करते हैं. तो restricted rotation होने की वजह से cis trans isomers exist करते हैं. इस वजह से ये यहां नहीं आ सकता जब तक पहले तो ये बॉन्ड इसको तोड़े फिर दोबारा इधर आके ज्वाइन हो. अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है कि ये क्लोरीन उठ के इधर आ जाए विद इन द सेम मॉलिक्यूल. दैट इज व्हाई दिस वन एंड दिस वन आर कंप्लीटली डिफरेंट आइसोमर्स. लेट्स ट्राई वन मोर. Sir, so basically the bonds are broken first और फिर वो जाके बनते हैं दूसरे वाले. नहीं, मतलब अगर मैंने इसको ये बनाना है तो मुझे बॉन्ड्स बना तोड़नी पड़ेंगी, नया पूरा रिएक्शन करना पड़ेगा किसी तरीके. इसको OH से रिप्लेस करना पड़ेगा और इसको Cl से रिप्लेस करना पड़ेगा. इट्स अ होल न्यू गेम. डायरेक्ट इससे ये नहीं बन सकता. Okay, ठीक है, thank you. ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं. लेट्स ट्राई इट हियर. ओके, लेट्स से आई हैव दिस. लेट्स सी इफ आई कैन हैव सिस ट्रांस आइसोमर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास चूंकि दो डबल बॉन्ड्स हैं, मैं उनको दो डबल बॉन्ड्स हैं तो मैं इनको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं. नोटिस कि मैंने इसको एक एंगल पे बनाया. एंड आई वुड एडवाइस कि आप जब भी 2 3 4 जितनी भी बॉन्ड्स हैं उनको इस तरह एंगल्स पे बनाया करो. ठीक है. अच्छा, राइट नाउ लेट मी पुट ऑल द थिंग्स हियर. इस डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे CH3 अटैच्ड है, तो ये CH3 हो गया. इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ एक साइड पे तो ये पूरा अटैच्ड है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. सो ये तो सिस ट्रांस आइसोमर नहीं कर सकता बिकॉज दो सेम ग्रुप्स आ गए. एवरी कार्बन शुड हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स बट बोथ कार्बन शुड शेयर वन. ये हमारा रूल है. जैसे इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक ये पूरी चीज है, और इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक ये पूरी चीज है. दे आर टू डिफरेंट ग्रुप्स बट दे बोथ शेयर दिस हाइड्रोजन, तो एक कॉमन इनके बीच में है. अच्छा, लेट्स सी कि अब इसके आइसोमर्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे. ऑब्वियसली ये वाली साइड तो सिस ट्रांस आइसोमर नहीं कर सकती. सो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको ऐसे ही ड्रॉ करूंगा और एक साइड को स्विच कर दूंगा. तो मैं इस साइड पे इधर हाइड्रोजन ले आता हूँ, इधर CH3 ले आता हूँ. तो मैंने इस साइड को स्विच कर दिया है. तो अब ये बन गया है सिस और ये बन गया है ट्रांस. क्यों? हाइड्रोजन द कॉमन थिंग इज ऑन द ऑपोजिट साइड. सही है. अच्छा, व्हाट इफ आई चेंज दिस अ लिटिल बिट. व्हाट इफ आई हैव Cl here? Now I can get a situation where things are kind of going to be a little more complicated. First of all, how many isomers will I get depends on how many cis trans bonds do I have. I can have one cis trans isomer because of this double bond, and I can have one cis trans isomer pair because of this double bond. So total हो गए 4, 2 power 2. Because दो डबल बॉन्ड्स हैं जिनके cis trans isomers हैं, तो वो 2 power 2 हो जाएगी. अगर 3 डबल बॉन्ड्स होती हैं तो 2 power 3 हो जाता, जो 3 डबल बॉन्ड्स विद cis trans की सारी रिक्वायरमेंट्स. अच्छा, अब इसको आगे कैसे करेंगे? Here's what you should do. Pick any one of these और उसको आपने फिक्स कर लेना है पहले. अगर 4 टोटल बनने हैं ना, तो 2 में आपने एक को फिक्स कर लेना. तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसको फिक्स कर रहा हूं सिस पे और इसको अब मैं चेंज करूंगा. ये अभी ट्रांस है, अगले सेटअप में मैं इसको सिस ही रखूंगा. लेफ्ट साइड आई कीप इट सिस, लेकिन मैं दूसरे को स्विच कर दूंगा. तो दूसरे को मैंने
उसको भी सिस कर दिया। तो पहले इसको सिस करके इसको ट्रांस किया और अब इसको सिस करके इसको सिस कर रहा हूं। क्लियर? हाउ डू आई नो दिस इज सिस? बिकॉज हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, और मैंने इस साइड पे कोई चेंज नहीं लाया। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इसको फिक्स किया, तो मैं यहां पे इसको ट्रांस करूंगा और मैं इसको अब स्विच करूंगा। तो ये अगर ट्रांस पे फिक्स कर दिया मैंने इसको, तो अब मैं इसको स्विच करूंगा, ये सिस है ना, अब इधर ट्रांस करूंगा, तो वो ट्रांस पे फिक्स्ड है क्योंकि ये दोनों ट्रांस हैं, तो इस वजह से मेरे पास ही बना, तो ये मेरे पास बन गया, ये होगा CH3 और ये ट्रांस हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको अब ट्रांस रखूंगा, ठीक है, नो वेट, इसको मैं सिस करूंगा क्योंकि मैंने ये ट्रांस ट्रांस के दो बना दिए, अब मैं सिस सिस के दो बनाऊंगा, तो मैं इसको सिस रखूंगा और यहां पर ट्रांस कर दूंगा। Sir, यस, weren't we keeping right वाले का trans fixed? जो bottom में है। देखो मैंने क्या किया है, मैंने पहले इसके सिस फिक्स करके इसके स्विच किया, ऐसे ही है। अब मैंने इसका ट्रांस फिक्स करके इसको फिर स्विच किया। Sir, so basically उसके बाद हमें like bottom वाले का भी fix करना होगा। नहीं नहीं, हमने एक का ही फिक्स करना है, मैंने पहले इस साइड का सिस फिक्स करके उसको स्विच करता गया हूं, अब मैं इसी साइड का ट्रांस फिक्स करके उसको स्विच कर रहा हूं। अगर आपको ओ लेवल प्रोबेबिलिटी याद है तो उसमें हम इस तरह का हेड टेल वाला एक मेथड बनाते थे कि कॉइन्स हैं तो हेड होगा टेल होगा, याद है? Yes, sir. कॉइन्स वाला, हाँ, तो दिस इज जस्ट लाइक दैट। बस इसमें क्या है कि हमारे पास दो सिचुएशन है, हमारे पास एक सिस है एक ट्रांस है, दूसरा सिस है ट्रांस है, तो आपके पास एक ऑप्शन होगी सिस सिस, एक सिस ट्रांस, एक ट्रांस सिस और एक ट्रांस ट्रांस। तो ये आपके पास आ गए। नाउ वी आर डन विद द मेन आइडियाज ऑफ आइसोमरिज्म, so I'm sharing a worksheet with you and I want you to attempt it. Sir, I'm so sorry, but basically if we have two pi bonds, मतलब like two double bonds, तो हम उसके हमारे पास double isomers होंगे। Yes, नहीं मतलब two double bonds that fulfill the requirements of cis trans isomerism. Cis trans isomerism की requirement क्या थी? pi bond। Pi bond होनी चाहिए, each carbon should be to two different groups and they should share one group with each other. ठीक है, got it, thank you।